Live. Throughout the day, on all our social media handles and emails, we have received emails and messages from aspirants and CAT test takers on various questions ranging from the difficulty level of the first slot versus second slot, then then to the expected percentile. Now that we are done with all the three slots, we can give you a much better picture right now regarding the difficulty levels, the expected percentile, and much more. To answer all your questions, we have with us Tridal Sir from IMS this evening. Good evening, sir, and thank you so much for doing this session with us. Hi, good evening. Thanks for having me. Okay. So, and before we start, just a brief introduction about Tridal Sir. So, Tridal Sir is a seasoned CAT mentor and he has trained over 9,000 odd students at IMS thus far. And he's a passionate CAT taker. He has scored 99 plus percentile in more than, uh, I'm sorry, he has scored 99 percentile in his area 7 times, and the highest percentiles being 99.99 in DILR and 99.91 in Quant. So, welcome, sir. Once again, thank you so much. Really, really excited to do this session with you. Thanks, Devan. Yeah. Okay. So this is how it's going to go. So, I'll ask you a few questions and then we'll take up some of the audience questions. So, everyone watching the session live, please feel free to put down your questions. We'll take them up and sir is going to answer the questions. To start off with, sir, the first question is, so CAT is now over, and the students must be eager to know the verdict on the score and percentile. But before we get there, sir, how was the test structure today? I mean, was it same as the previous year? So, Devan, yes, as far as structure is concerned, the number of questions were absolutely same. So, it was predicted there will be 66 questions with a breakup of 24 in verbal, 20 in DILR, and 22 in quant. That was absolutely same. There's only one surprise, I would say, a couple of surprise in verbal section. The questions of para completion were introduced in place of odd one out. Two questions were new type, and as far as DILR is concerned, there are four sets of 4, 6, 4, 6 last year, whereas this year it was 5 question each. So 4 sets, which 5 question is. Apart from that, it was same as expected. Okay, okay, okay. So sir, अगर आपको इस बार section by section DILR, VA, VRC या QA के साथ, if I were to ask you to compare it last year's paper, so how will you rate this time's paper? Was it difficult? Was it easier than last year? Got it. So I'll compare it with last year's first slot. Last year का जो पहला slot था, अगर उसके comparison में अगर मैं बात करूं, so this year I would say CAT seem to be a notch higher overall. But apart from that, अगर मैं let's say section wise अगर बात करूं, so in the first slot जो सुबह का slot हुआ, I would say verbal and quant were seem to be manageable. LR was the one जहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई है. सेकेंड स्लॉट की अगर मैं बात करूं, इन द सेकेंड स्लॉट ओवरऑल तीन सेक्शन में अटेम्प्ट्स अच्छे रहे हैं. अगर क्वांट का पर्टिकुलर में बात करूं तो क्वांट में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जहां पे ऑप्शन पे से जाना पड़ रहा था, थोड़ा थॉट डालना पड़ रहा था. एंड VARC में एक आध आरसी ऐसा था जहां पे थोड़ी डिफिकल्टी पड़ रही थी पढ़ने में. थर्ड स्लॉट का अभी एनालिसिस आया है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव टेकन थर्ड स्लॉट एंड आई हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन. थर्ड स्लॉट में भी DILR और क्वांट थोड़े अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं. Verbal seem to be on the easier side on the third slot. Overall, अगर मैं बात करूं तो I would like to congratulate IIM Bangalore for making papers in 3 slots, still managing the scores such a way कि भाई overall शायद उनको section wise scale up scale down करना पड़ेगा, but overall the overall cutoff seems to be on the similar lines for all 3 slots at the first outset. Yeah. Got it. Sir, according to you, मतलब which slot was the most difficult? slot में कोई section में कोई slot में बच्चों का ये सवाल होता ही है, बट ये थर्ड स्लॉट अभी आधे घंटे पहले खत्म हुआ है. तो बहुत ही जजमेंटल डिसीजन अगर होगा, अगर मैं अभी दूं, पहले 2 स्लॉट का मैं कंपैरिजन कर सकता हूं. तो पहले 2 स्लॉट का अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्लॉट डेफिनेटली हैड मोर डिफिकल्ट DILR एंड सेकेंड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा क्वांट डिफिकल्ट रहा था. वर्बल दोनों ही स्लॉट में अगर मैं बात करूं तो एक आरसी वाज डिफिकल्ट और बाकी सब मॉडरेट थे. तो वर्बल दोनों का एट पार था.
DILR in slot 1 was definitely more challenging, whereas in quant slot 2 was slightly challenging. slot 3 के जैसे अभी मेरे को रुझान आ रहा है, अभी पता चल रहा है लोगों से जानते हुए, slot 3 में verbal was the easiest, DILR और quant दोनों ही थोड़े ट्रिकी मालूम हो रहे हैं, स्पेशली DILR में क्वेश्चन सिलेक्शन was the most trickiest part in the slot 3. Okay. And Rohit Meena, sir, I'll just take on an audience question. So Rohit Meena is asking, sir, what about the overall difficulty? Yes, so overall difficulty की अगर मैं बात करूं, so as I already discussed कि last year का जो भी 99 percentile के लिए कट ऑफ रहा था, उससे थोड़ा डाउन जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स, इट्स व्हाट द फर्स्ट थॉट्स आर. तो 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा ओवरऑल में. सो 90 to 95 स्कोर पे, रॉ स्कोर पे 99 परसेंटाइल के आसपास हमें दिखना चाहिए इस साल. दैट्स व्हाट द ओवरऑल थॉट इज. अगेन वो नंबर्स पे मैं आऊंगा शायद इन द अपकमिंग क्वेश्चंस. आई गेस वो होगा ही आपका एक पर्टिकुलर सवाल, आई एम वेरी श्योर. ठीक है. वो तो ठीक है सर. बिफोर वी गो टू दैट सर, अभी जैसे हमारे काफी इनसाइड आईएम के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे अभी बच्चे एग्जाम के बाद ये स्टार्ट कंपेयरिंग करते, सिम कैट का पेपर जैसा, सिम कैट की कुछ मॉक, जैसे मॉक नंबर 12 या 13 के हिसाब से आया था कुछ क्वेश्चंस. यहाँ पे कोई बोल रहा है एम कैट का, कोई बोल रहा है करियर लॉन्चेस से मिल रहा है. तो as a part of IMS, so how close do you think was the actual paper to the SimCats today? What's your take on that? ठीक है, सही बात है. तो एज अ मेंटर व्हाट वी डू इज हम सारी सिमकैट का एनालिसिस भी यहाँ पे करते ही है. सो आई नो ऑल द 15 सिमकैट्स, प्रॉक्टर्ड सिमकैट्स दैट वाज गिवन टू द स्टूडेंट. ऑल द सिमकैट्स वर इन वेरिएड डिफिकल्टी लेवल. तो उनको अलग अलग तरीके के डिफिकल्टी लेवल से हमने बच्चों को दिया था. मतलब इट विल बी ब्रेव ऑफ मी अगर मैं ये बात करूं कि बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने अच्छी तरह से सिमकैट लिखा होगा, सारे सिमकैट, दे वुड हैव फाउंड दिस टू बी सिमकैट 16. तो थोड़ा ये समझते हुए कि मतलब जो आज के वर्बल के सेक्शन थे, वैसे मतलब एक फर्स्ट स्लॉट में ही एक आरसी था, देयर वाज एन आरसी जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने पढ़ा हुआ था, दैट दे गिव फीडबैक, कहीं टेक होम में या कहीं सिमकैट में उन्होंने पढ़ा हुआ था. दैट वाज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट आई केम टू नो कि हाँ सिमकैट इतने रियलिस्टिक रहे. तो मॉक्स हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. कोई भी मॉक अगर आपने ढंग से लिखे हैं तो यू विल फाइंड सिमिलरिटीज. द पीपल हु आर मेकिंग मॉक दे टेक दिस एज देयर फर्स्ट जॉब के जितना हो सके उतना कैट से रियलिस्टिक नजदीक का पेपर रखे. एंड दैट वाज इट दिस ईयर एज वेल. कैट हैड नो सच बिग सरप्राइजेस कमिंग टू द स्टूडेंट्स में. जो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड थे, उन स्टूडेंट्स को मतलब एक मॉक से थोड़ा नजदीक ही लगा होगा ये पेपर. Fantastic. Yeah. So now coming to the most asked question, ki what is your verdict on score versus percentile? I know कि IMS ने एक website पे you have put up the chart, but वो slot 1 slot 2 के लिए होगा. तो what is your take, मतलब what is your verdict कि कितने score पे कितना percentile आ सकता है overall, sectional भी and overall भी? I think that would be really helpful for the viewers. राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट स्लॉट वाइज, तो अगर मैं लेट्स से स्लॉट की बात करूं तो स्लॉट 1 एज आई सेड, अगर उसमें मेरे को 99.5 पे जाना है, सो अगर वीएआरसी में कोई 40 से 45 की रेंज, अगर मैंने एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 44 के आसपास अगर स्कोर करता है, सो दैट वुड बी अ 99.5 अकॉर्डिंग टू मी. डीआईएलआर में इट विल बी समवेयर अराउंड 35 एंड क्वांट में इट विल बी समवेयर अराउंड 40. ओवरऑल अगर कोई 100 से 105 के बीच में नंबर करता है, ही शुड गेट अप टू 99.5. अगर आप 99 के लिए पूछ रहे हो, सो वही नंबर रहेंगे 41, 30, 37 एंड 91 के आसपास. मतलब पीआरसी में इट शुड बी 41, डीएलआर इट विल बी समवेयर अराउंड 30, क्योंकि दो सेट अगर किसी ने बहुत ही ढंग से निकाले हैं और सारे सही किए हैं, सो दे में रीच अप टू 99, कॉन्ट 37 एंड ओवरऑल समवेयर अराउंड 90 to 95. 91 इज समथिंग दैट वी वुड गिव एज एन वर्डिक्ट. सिमिलरली स्लॉट 2 में अगर हम जाएंगे तो 19-20 का ही फर्क है. सो 99 के लिए वीआरसी विल बी एब्सोल्युटली सेम, 41 के आसपास रहेगा. डीआईएलआर स्लाइटली अ नॉच अबव 32 के आसपास 99 बनेगा, और क्वांट अ नॉच बिलो 36 के आसपास. ओवरऑल स्कोर शुड बी सिमिलर, वही 90 to 95 के आसपास अगर आपका स्कोर है, यू शुड रीच अप टू 99. स्लॉट 3 जिस तरीके से इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं, बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए वो सब, वर्बल शायद 1-2 मार्क ऊपर जा सकता है. सो 40 to 43 विल बी फॉर 99. DILR will be somewhere around
30 and quant should be somewhere around 36. Overall 90 के आसपास अगर आपका raw score है, you can reach up to 99 percentile. That's what the initial thoughts are. Okay, okay, lovely. So, Abhi, we have another question. So, 80 percentile marks over. 80 percentile के लिए कितना overall marks? 80 percentile के लिए overall, I would say anything between, I would say 37 to 44. उसके बीच का अगर कोई नंबर है, अगर मैं 40 to be on a safer side बोलूं, so 80 percentile के आसपास हो सकता है overall. अगर मैं section wise बताऊं तो verbal में somewhere around 17 to 20, DILR में it should be 13 to 15 and quant में it should be 11 to 15 के आसपास नंबर होना चाहिए 80 percentile के लिए. Overall it should be somewhere around 40 to 42 marks. Yeah. Got it. Okay. 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 There are no questions from the audience as of right now. Okay. So, sir, when can we expect the percentile? I mean, sorry, not percentile. When can I expect the result? When can we expect the result to come out? So generally IIMs send the result in the first or second week of January. But CAT एक चीज बहुत ही बढ़िया करती है that they send your response sheet within 7 to 15 days. तो अब जैसे ही आपको response sheet मिल जाता है, मतलब आपका आंसर आपको पता है and you know the real answer as well, so you can know at least scores. And at IMS we have big data. There are a lot of people who prepare for IMS, so we gather the data and we kind of predict the percentile within a 2 day or two when the response sheet comes. So मतलब prediction अगर मैं बात करूं तो 15 दिन में बच्चों को पता होगा कि उनका किसके आसपास परसेंटाइल आएगा. रियल रिजल्ट जो है it will come in the first or the second week of the January. Okay, वो जनरली वो ZAT के बाद या ZAT के जस्ट एक दिन पहले या ZAT जनरली हाँ ZAT के 1-2 दिन में आ जाता है. That's what the thoughts are. इस बार 8 जनवरी को ZAT है तो I am predicting 7th या मतलब 9th भी हो सकता है. जनरली उसके आसपास दिखेगा ये रिजल्ट. ओके, तो सर हम ZAT के लिए ZAT के बारे में बात की तो सर अभी CAT इज नाउ डन, राइट? सो किसी का बहुत अच्छा हुआ होगा, किसी का खराब हुआ होगा, बिकॉज एट द एंड इट्स अ परसेंटाइल गेम, राइट? सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू समवन जिनका अच्छा नहीं गया होगा? अभी CAT is not as per her expectation or his or her expectation. What your point? See again, what we need to understand here is as a mentor भी मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ, बीत गई सो बात गई. Now you cannot undo the paper that you have appeared for. ठीक है? तो what do we have in our hand? So probably we have lot of things in our hand. जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात जो होगी वो we have to gather ourselves. ठीक है? अगर वो एग्जाम ठीक नहीं गई, I know a lot of students have been preparing for months and years for this exam. और कभी-कभी है ना इट इज इजियर सेड देन डन कि भाई हाँ इसके लिए भूल जाओ, बट बच्चों को बहुत ही दे आर इमोशनली अटैच्ड टू दिस एग्जाम. तो यहाँ पे मैं बस वही बताना चाहता हूँ, बी लॉजिकल. अगर आप लेट्स से स्लॉट 3 में थे, आपका DILR अच्छा नहीं गया है, तो पॉसिबल है पूरे इंडिया का अच्छा नहीं गया. So what happens is one of my students who scored 7 attempts in DILR in CAT 2020, 2 साल पहले 7 अटेम्प्ट हुए थे, and she eventually ended up getting 98 percentile in DILR. उतना टफ था वो स्लॉट. सो अभी बच्चों को शायद पता नहीं है कि उनका कैट कैसा रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी. तो जब रिस्पॉन्स शीट आएगी तब एक्चुअली पता चलेगा कि तुम्हारा कैट कैसा रहा है. अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? सो व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज प्रिपरेशन ऑफ द अदर एग्जाम्स. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स कमिंग अप. उनके बारे में अपने को चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में हमें तैयारी करनी चाहिए. दीज नंबर्स अगेन हमने प्रेडिक्ट किए हुए हैं एंड जनरली IIMS जो प्रेडिक्ट करता है वो मोर और लेस उसके आसपास ही रहते हैं. बट देन 99 पे भी बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, 95 पे भी बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, 93 पे भी. सो आपका कोई भी नंबर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी. सो आई थिंक यू शुड गैदर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. ठीक है? दैट्स व्हाट द मेन थॉट प्रोसेस शुड बी. अभी बच्चों का वही होना चाहिए. तो आज रेस्ट करो, कल से आप IFT स्नैपचैट के लिए तैयारी करने बैठ जाओ. अब उसी पे हम बात करने जाएंगे कि भी आ रहे अपकमिंग एग्जाम्स कौन कौन सी आ रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट दैट आर ऑन द वे. अब इनिशियली जो सबसे पहले आ रही है वो 3 दिसंबर को माइकैट है. उसके बाद दे हैव 3 स्नैप एग्जाम. एनमेट के भी विंडो अभी बचे हुए हैं. IIFT is coming on 18th of December.
That, as you have pointed out, is coming on 8th of January. TISNET will come in January. MICA का second attempt आएगा. So there are a lot of exams there from which you can get into a good B school. So I think the focus should be on the preparation of the other exams. उससे related बच्चे कहीं पे कुछ भी doubt पूछना चाहे तो आपका माध्यम है, IMS है. We will definitely help you, help all the student, help the student community to understand these exams as well and to get best in these exams. Of course, CAT में भी शायद बच्चों ने अच्छा ही किया है. इट्स एन इमोशनल फीलिंग कि हमने अच्छा नहीं किया है. जस्ट गेट रीड ऑफ दैट. इफ यू हैव डन वंडरफुली वेल, कांग्रेचुलेशन. अगर आपने एकदम पथेटिक किया है, देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका माइंडसेट वो होगा कि उनको पता ही नहीं है उनका कैसा रहा है. तो ऐसे बच्चों के लिए आई वुड से जस्ट वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट एंड टिल देन गो अहेड विद द अदर एग्जाम्स व्हिच आर कमिंग. Wonderful. So while we are on this topic, so there is a question on normalization. So how are scores normalized? I mean, ठीक है, इसमें ना बहुत बहुत सिंपल सा, मतलब सिंपल सा तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत आई वुड से सीधा सीधा मैथ है. इट इज मैथ. सो फॉर एन एग्जांपल, देयर इज टॉप 1% इन द फर्स्ट स्लॉट, टॉप 1% ऑफ द सेकंड स्लॉट एंड टॉप 1% ऑफ द थर्ड स्लॉट. अल्टीमेटली क्योंकि 3 जगह पे हमने बच्चों को इक्वली डिवाइड किया हुआ है, their score, raw score will be entitled to 99 percentile. And then it is seen कि भाई इसका कितना कम है, सेकंड स्लॉट का कितना ज्यादा है, and then the scores are normalized in such a way that their scaled score will be same. So it may happen कि तुम्हारा raw score और मेरा raw score अलग है, but you are in top 1% of your slot and I am in top 1% of my slot. Depending upon that, there is a formula, there is a formula that is used, mathematical formula है, और जहां से ये normalization होता है. IIMs have been wonderful in doing this process, so we need to trust this process. यार मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया होगा पूरे इंडिया के लेवल पे, उस हिसाब से you will get the scaled score. नॉर्मली स्पीकिंग, जिस स्लॉट में डिफिकल्टी लेवल कम है उनका स्केल डाउन होता है. मतलब आपका रॉ स्कोर हुआ है सपोज लेट्स से 105 एंड योर स्लॉट वाज इजियर, it can go down to let's say 101, 102 depending upon difficulty as compared to the other slots. Generally scaling at probably 99 percentile plus or minus 2-3 मार्क का होता है. बहुत ज्यादा स्केलिंग हमने होते हुए नहीं देखा क्योंकि IIMs also take care of having similar level of difficulties, among all 3 sets. got it. Okay, sir. Thank you. So Sagar has asked a question. What about 90 percentile? I think overall, I think. ओवरऑल अगर 90 की बात करें, so it would be in the range of I would say 52 to 55 के आसपास रहेगा. So if you are a person who has genuinely attempted 25 odd questions and expecting a decent accuracy, you should get up to 90 percentile. That's what the verdict would be. Okay. So Samit had asked a question. Sir, GDPI के लिए क्या करें? बहुत ही अच्छा सवाल है. I generally enjoy these kind of questions because this is a forward looking question. So when we talk about let's say VAT PI to be precise, GD तो बहुत सारी कॉलेज ने अभी मतलब एलिमिनेट ही किया है. So VAT PI के लिए there are a lot of things that you should definitely start doing. तो अगर आप let's say CAT के बाद बहुत सारी दूसरी एग्जाम्स नहीं लिख रहे हो, your first aim is to get into a B school. ठीक है, CAT का स्कोर is I would say one milestone. The second is selection process is VAT PI. So I think that's where people have to pitch in. So agar if I were to think of the aspects which are being covered during VAT PI, सबसे पहला बात होता है about yourself. So you need to prepare an SOP, statement of purpose. Why do you want to do an MBA? आपकी पूरी lifestyle या पूरी life एक से 600 to 700 words में आपको लिखनी चाहिए ताकि आप खुद के बारे में बहुत clear. Second is you should definitely follow a lot of current affairs, especially your area of interest. Suppose someone is interested in football and is not following FIFA 2022, that's a problem. ठीक है, someone is following cricket और उसने वर्ल्ड कप फॉलो नहीं किया है तो that's a problem. So what you need to do is current affairs related to your area you should know. बेसिक जो मैनेजमेंट न्यूज है उसको भी आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ GDPI related material that will come on the IMS. मतलब अगर if he or she is an IMS student तो IMS के पोर्टल पे आएगा GD VAT Bible. लास्ट ईयर किन कॉलेजेस में क्या क्या सवाल पूछे गए थे, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेरियस वेबसाइट इंक्लूडिंग शायद इनसाइड IIM में भी अवेलेबल रहते हैं. तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ मेंटर देयर के सर अगर मुझे ये सवाल आएगा तो मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकता हूँ. बेसिकली इट इज अबाउट यू
about the college and about the world. If you know these three things, I think you are one of the student who is sorted in the GDPI race. वैट की जहां तक बात है, प्रिपेयर राइटिंग लॉट ऑफ वैट, तो आपका एक राइटिंग स्किल्स भी दिख जाएगा आपको. इट विल इंप्रूव ग्रेजुअली. ऐसा नहीं है कि जिस दिन वैट है उसके अगले दिन लिखने बैठे और आप एक बढ़िया से राइटर बन जाओगे. Things improve gradually, so you should definitely start writing VAT from today itself. Okay, sir. Thank you for this. So we were talking about the OMED prep, right? The MyCat, IFT, Snapchat, Tisnet, etc. So, but how do you exactly prepare for them? मतलब आपका देखो syllabus तो same as CAT, right? 19-20 का ही फर्क है. But then you have decision making in ZAT. Then you have general knowledge in IFT. Snap का LR is a bit different from that of CAT, right? So how? Because it's just the exams are just coming. So what would be your advice to aspirants preparing for OMED? So how, any resources, any tips? I got your point. So ultimately, see, preparation is, जिसने एक बार कैट की पूरी तैयारी देखी हुई ना, उसको आइडिया है कि तैयारी कैसे करने का. जैसे कैट में भी सबसे इंपॉर्टेंट थे सिम कैट्स, मतलब द मॉक्स. वैसे स्नैप के लिए भी मॉक्स. सो फर्स्ट मॉक एक स्टूडेंट जब लिखता है ना, तो उसको आइडिया आ जाता है दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैट. मुझे 60 मिनट में बहुत कुछ कर लेना है. सेम गोज विद ऑल दी अदर एग्जाम्स एज वेल. सो फर्स्ट थिंग, आई थिंक आप अगर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट राइटिंग मॉक्स. सेकेंड, यू विल अंडरस्टैंड कि इन मॉक में क्या डिफरेंट है कैट से तैयार करने के लिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल जैट का डिसीजन मेकिंग हो गया. सो लेट्स से if I see last 5 years paper, I'll come to understand that what kind of decision making questions that they are asking. So zat papers are available online as well. So वहां से आप तैयारी कर सकते हो. स्नैप जनरली पेपर डिस्क्लोज नहीं करता, बट स्नैप के मॉक्स के थ्रू आपको पता चलेगा. सो स्नैप के एलआर के लिए वो मतलब थोड़े विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए या थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करने वाले सवाल हो गए. सो उसकी प्रैक्टिस अपने को अलग से करनी चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट हु गिव एन एक्स्ट्रा मटेरियल. फॉर एन एग्जांपल, IMS gives an extra material for this additional एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मेट. और जहां तक लेट्स से माइकेट का सवाल हो गया, ऐसी कोई पर्टिकुलर एग्जाम का सवाल हो गया, उनमें राइटिंग स्किल्स का भी टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो अगेन, एज आई सेड, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम कि आपको कौन सी एग्जाम लिखनी है, उसमें क्या डिफरेंट है, देन कैट, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड यू विल डू वंडरफुली वेल. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Just checking for other questions. So Puneet Dubey has asked expected 99 percentile score for slot one. I think as per IMS's website, it stands at 91. So, yeah. Dhruv Kumar Doshi. So I said 90 to 95. That's. So Dhruv Kumar Doshi is asking, learn tab first RC similar to slot one RC. I have no idea what this means. The Sagar, we have answered how. So this means it is the question is from IMS material. That's what he's saying. Okay. So learn tab is IMS. Yeah. So the RC was from IMS material. Okay, that's amazing. We have to verify that. That's amazing. Okay. So guys, if you have any other questions, please ask. We'll be taking them up one by one. And coming to CAT again. So another question here. So someone is starting preparation for CAT 2023. So what would be your, I know this session is not for that, but what would be your advice for someone who is starting exactly 1 year? I mean, next year, by all means, the CAT 23 will be on 26th of November, right? So what will be your advice to someone starting CAT preparation right now with 1 year to go? That's an interesting question. So I think someone who's preparing for CAT 23 has a huge amount of time. So एक साल का समय है. So I think definitely आज के verbal से मेरे को ये पता चला, the one who's with good reading ability, good reading habits, in fact, has done reasonably well in this exam. So by verbal के लिए I would say definitely go with lot of readings, different type of genre. The book reading हो गया, newspaper reading हो गया, article reading हो गया. That is something that they definitely look forward to. Devayan, am I audible? Can anyone confirm? Am I audible? Okay, fine. So meanwhile, Devayan joins. So when we were talking about the person who's preparing for next year's CAT,
So next year's CAT is 1 year away. Develop good habits. It includes a lot of reading. Apart from that, when you talk about math, start solving basic concepts. So like arithmetic was asked the most this year, and it has been the trend. So start preparing for them because you have a larger chunk of questions coming from there. Apart from that, when you talk about DILR, I would say start solving basics. So like solving Sudoku, solving games like Kakoru will definitely help. So it's like developing habit in the first couple of months, followed by a lot of questions, which are CAT level question. So I think they can just bifurcate their preparation into three parts. First is developing good habit. Second, solving the material, and third, giving the mocks in I would say 4 months each. Okay, sir. Okay. I'm so sorry about the internet issues. Okay. So Shaunak has asked. So Jay Patel is saying slot 2 quant was amazing, sir. And Shaunak is has written really scared about clearing the DILR section percentile. Only was able to solve one set. Got all right. Is a score of 15 enough to clear the cutoffs for IIMs? So again, when you talk about score of 15, so as per our prediction, 15 will fetch an 85 percentile. So 85 percentile, I guess, is good enough for most of the IIMs. When you talk about DILR cutoff, so yeah, 15 score is not very scary score as far as solving of we are getting a call from an IIM is concerned, provided you have done wonderfully well in the other two sections. I'm terribly sorry about the internet issues. I have fixed it right now. I think it won't happen. So I think I've answered this question that yeah, 15 will fetch somewhere around 85 percentile. So that's good enough if other two sections are really well. Yeah. Okay, sir. I think that brings us to the end of the sessions. Any parting thoughts that you want to share with the aspirants, sir? I mean, or anything else, any other analysis that you have regarding the paper that happened regarding the three slots today? Anything else? I mean, and the viewers, if you have any questions, please feel free to ask. We're taking all the questions one by one. So yeah. Definitely. So when you're talking about any parting instructions, so the CAT exam every year it takes a lot of toll on a lot of management aspirant that it's just one day and you have to prepare for the entire year. I would just tell the students to be very optimistic about everything. So if you have cleared CAT, if you will clear CAT, be optimistic to get into a very good B school. If you can't, there are a lot of other options available as well in terms of formats, other exams. So do prepare for that. Just be very hopeful that you will do wonderfully well one day in your life. If you are preparing for competitive exams like this, ultimately you are developing your aptitude and your language, which anyways will help you, gain any kind of employment or probably entrepreneurship opportunities in the future. So you guys are prepared. Just take the things as they are. You have to accept if someone is something has gone bad, it's okay. Just focus on what is the next thing that is coming up. Awesome. So, sir, last question with Priti Ojha. Sir could attempt 14 questions in slot 2 verbal. What accuracy would fetch me the cutoff? Again, see, when you talk about sectional cutoff, a lot of colleges have sectional cutoff as low as 85 or 80 percentile. So when you talk about 14 attempts are I would say very good attempt. If you are talking about 90 percentile in slot one, we predicted it to be at a score of 24. So let's say even out of 14, you have corrected 10 and let's say 4 wrong, you will get 26, which will be help you to clear the cutoff. But you have to understand the process to enter into an IIM. It's not just clearing cutoff. Once you clear the cutoff, you have to be among top 1% of your area. If you talk about IIM Ahmedabad, they divide the profiles into 6 areas: AR1, AR2, AR3. So in that, if you are in top 1%, then you will get a call. So it's I'd say a bit complicated than it only a number. But yeah, you will get 90 plus percentile if you have 10 correct out of 14. That's what I can say as of now. Great. Okay, sir. So thank you so much for doing this session. I'm looking forward to doing another session with you once the CAT results are declared.
and I'll reach out to you for that. Thank you so much for your Yeah, thanks time a this lot, evening. Divayan and team Inside IIM for having me. I guess students have got the answers of their queries, and I hope to contribute